Assalamu alaikum everyone. So I'm basically back after a long break. Actually, I haven't been making a lot of videos recently. And it's primarily because I've been very busy with my training and everything that surrounds it. But I think the situation currently prompted a response because there is a lot of confusion surrounding the screening test. What it is, what are the marking scheme, what is the syllabus, how to tackle it, and how to incorporate it into your overall CSS preparation. So today, basically, the special assistant to the Prime Minister held a press conference in which he answered quite a few of these questions. And so I decided to make a video on it, and aspirants can be given clarity on the subject itself and what it means for CSS in the future as well. So we'll basically start with the schedule and the dates. So basically, what has been announced is that the advertisement will be put out on the 14th of November. The online applications will then open after the advertisement, and the duration for these applications would be about a month. So after the applications have been submitted, the test will be conducted on 20th of February, and the result will be announced within a period of about two weeks, which would be on the 7th of March 2022. And then those who qualify for the exam, for the written exam, would then have to fill documents from the 8th to 25th March 2022, and then we'll have the main written exam in on 30th May 2022. So it's basically the exam previously held in February has been shifted to 30th May, and the timing of the exam, which was previously held in February, has been replaced with the screening test. The screening test, which is basically an MCQs based test that will be used primarily to filter out serious candidates for the CSS 2022 attempt. So basically, these are the schedule and the dates. The syllabus and the revision of the syllabus has also been shared by FPSC on their website. So basically, there are about five major subjects in total. We have Islamic Studies, which is 20 marks, Urdu, which includes grammar and translation, which is also 20 marks, English, which includes vocabulary, grammar usage, and comprehension, is 50 marks. General ability exam, the portion is about 60 marks, and the general knowledge portion is 50 marks. So that makes a total of 200 marks. So now on to the more important part. The details about the exam are that there are a total of 200 MCQs, each carrying 1 mark. The time allotted for these MCQs is one MCQ, 1 minute for each MCQ, which would make it a total of 200 minutes. The passing marks have been allotted at 33%, which would be answering 66 MCQs correctly out of a total 200. The evaluation criteria is as such that there will be two sheets of MCQs, basically two sheets of carbon copies, one that will be submitted to FPSC and one that will be given to the candidate. The answer sheet for the screening test will be uploaded on the same day so that you can evaluate your answers and have an idea of whether you'll be qualifying for the exam or not. The official result will be shared within 2 to 3 weeks, so we'll have an understanding of who will be qualifying for the written exam in a period of about 2 to 3 weeks. Other related information for the screening test includes that the appearance in screening test will not count as a chance. So you won't, as you already know, that there are 3 attempts for sitting in a CSS exam. But even if you sit in a screening test and do not clear, your chance or your opportunity to sit in the exam will not be counted. So it won't be like if you fail the screening test, तो आपके 3 में से 2 अटैम्प्ट्स रह जाएंगे, आपके 3 के 3 ही अटैम्प्ट्स रहेंगे, आप बस स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं पास कर सके होंगे, तो इसलिए आप अगले साल दोबारा ट्राई कर सकते हैं. मोर ओवर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप अगर गलत जवाब भी देते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो दिस मीन्स दैट आई वुड हाईली इंकरेज एवरीवन कि आप अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठ रहे हैं तो यू at least attempt all 200 of the questions, because there are no negative marking, so you won't be penalized for the wrong answers. Thirdly, the screening test score will not count towards the overall marks. मतलब आपकी जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है जिसकी बेसिस पे आपकी एलोकेशन होती है, तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का स्कोर उसके अंदर काउंट नहीं होगा. सो बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर नहीं देना है, आपको सिर्फ पासिंग नंबर लेने हैं. तो आपको सिर्फ 66 आउट ऑफ 200 को टारगेट करते हुए उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है.
उसके अलावा जो आपकी कट ऑफ डेट है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमिन करती है, क्योंकि आपको पता है कि 30 ईयर्स का कैप है सीएसएस के ऊपर, तो वो आपका वही प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही होगा कि वो 31 दिसंबर 2021 को जो आपकी अगर एज है वही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट की जाएगी. सो दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द स्क्रीनिंग टेस्ट की इंफॉर्मेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट. अब इसके अंदर मैंने जो इसकी स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट की है वो इसको मैंने जो इनके 5 सेक्शंस हैं सिलेबस के उन्हीं के ऊपर डिवाइड कर दिया है. तो सबसे पहले जनरल नॉलेज का सेक्शन देखते हैं. तो उसके लिए आप कोई भी जनरल नॉलेज की किताब पकड़ सकते हैं. आप कोई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कि वर्ल्ड टाइम्स की किताब है, या फिर कैरावान पब्लिशर्स की एक किताब आती है, वन पेपर एमसीक्यूज़ की किताबें आती हैं उनमें से, या फिर आप ऑनलाइन भी आपको बहुत सोर्सेज मिल जाएंगी. pakmcqs.com के ऊपर आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगी जनरल नॉलेज के मुताबिक के लिए. उसके अलावा आप सीएसएस के एमसीक्यूज़ को टारगेट कर सकते हैं. आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज़ जो प्रीवियसली आए हैं उनको अगर प्रैक्टिस करें तो उससे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है. दूसरा मेजर पोर्शन जनरल एबिलिटी का है, जिसके अंदर अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी की जो सीएसएस का पेपर है उसके पास पेपर्स को ज़रूर देखें. उसके अलावा एक बुक जो मुझे काफ़ी मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुझे काफ़ी इस चीज़ ने हेल्प किया था, और वैसे भी इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर एनहांसिंग योर एनालिटिक कैपेसिटी, विच इज़ नो योर IQ. ये आपको किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगी. आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. उसके अलावा GRE मैथ्स की किताबें होती हैं बैरन वगैरह की, उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी तैयारी के अंदर. For English, I would again recommend a Barron's vocabulary that is primarily used for CSS preparation as well. And you can practice vocabulary through the Magoosh app, which you can find on the App Store or the Google Play Store. So these two resources would help with the English portion. Also, there's this comprehension portion there as well. So I would recommend to practice from GRE English as well, because they do have MCQ based comprehension exercises. So that's another option. For Urdu, I'd be honest, I'm not really sure how to prepare for Urdu because I haven't had that experience myself. But upon discussion with a friend who gave PMS recently, and Urdu is part of the PMS exam. So Urdu General by Caravan Publishers is one recommendations that was given to me. So I would recommend going through that for your preparation. For Islamic studies, again, CSS MCQs would be help, and then there's also the portion of objective study that you can do. So, for example, once you're reading about zakat, maybe it's a good idea to know when it was made compulsory, what are the details, who is zakat given to, who is eligible to give zakat, and what are the percentages of different zakat modes. So that is falls under the ambit of objective study. Now on to what the study plan for CSS 2022 would be. uh, for starters, it's very important that you stay calm. I understand that this is very new. The screening test hasn't been done before, so it's very normal to fear newness. But you need to understand that this is new, but it is not difficult. As you have already told, you just have to clear the screening test exam, and it's 33% of the passing rate is 33%, which is very doable. So what you need to do is to just stay calm, understand that this is new, but also you have a lot of time to prepare for it. The exam which was previously held in February, which you already been preparing for, is now on May 30th. So that's an extra time of about 3 months which you have. So that's something that's very easily coverable. So you don't let it overwhelm you. Stay calm. Appreciate the newness of it, and just understand that you have to pass the screening test. The rest of the exam is the same as it was before. Also, because it's just 33% is the passing rate, so don't over focus on screening test exam. As I've already mentioned, the screening test marks won't be incorporated into your final result. It won't determine your final merit, so you just need to clear it so that you can sit in the written exam. So just prepare for it according to this requirement, that you just need enough knowledge to clear a CSS screening test. Don't need to top it or anything. So for that, I've given one suggestion, is that if you're studying for an average of 6 to 8 hours every day,
So till February, I would recommend giving 2 to 3 hours every day for MCQs. आप हर रोज़ कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ के उसके 2 से 3 घंटे उसके MCQs को दें, उनको प्रिपेयर करें, और उसके बाद जो 4 से 5 घंटे आपके बचते हैं उनको उनको अपनी रिटन प्रिपरेशन में सर्व करें। ये ना हो कि आप फरवरी तक सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें और आपकी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन लैक करे और उसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह जाएँ। क्योंकि असल चीज़ तो आपकी रिटन की प्रिपरेशन है, वो दैट विल डिटरमिन योर मेरिट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। ये तो सिर्फ एक समझ लें फ़िल्टर के तौर पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको नॉन सीरियस कैंडिडेट से अलहदा कर सकें। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर द रिटन एग्ज़ाम। और फाइनली आई वुड से कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी आप MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप दफ़ा उनको गो थ्रू करेंगे, उतना आपके ज़हन में वो चीज़ बैठ जाएगी। आई अंडरस्टैंड MCQs आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर रट्टा ही लगाना पड़ता है। इट्स मोर और लेस रोट लर्निंग। और कुछ लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें याद रखने में थोड़ा मसला आता है। उन उन चीज़ों को फिर याद रखने के लिए यही होता है तरीका कि आप उनको अपनी नज़र से ज़्यादा गुज़ारें, और वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो ओवरऑल वी अंडरस्टूड व्हाट द स्क्रीनिंग टेस्ट इज़, उसके क्या मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और इसको किस तरह से अपने जो स्टडी प्लान है उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। Again, I would say this, कि I understand that the screening test is new, but you do not let it uh, become something that's a fear factor for you, that is something जिससे आपको डर लगे। आप इसको उसी हिम्मत के साथ, उसी कोशिश के साथ टैकल करें जिस तरह अभी तक आप तैयारी करते आए हैं, और बस स्टे काम, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये भी मरहला आसानी से पार हो जाएगा। And thank you so much for listening. If you require any further information, you can visit my Facebook and Twitter page. I would recommend that you subscribe to this YouTube channel as well. I will start sharing more videos related to park affairs, related to other CSS subjects, and even related to screening on this page. So I would recommend that you do subscribe to it. You can go through the previous videos as well. And best of luck for the exam. Again, do not get overwhelmed. Stay calm, and inshallah you will ace it. Best of luck. Allah Hafiz.